Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with the 7th December 2020, the Hindu Daily News Analysis. We are going to analyze the important articles, so what articles you have to study from today's newspaper, and I'm going to give you a homework also regarding the self-reading of editorials from the Hindu newspaper. तो हिंदू न्यूज़पेपर से एडिटोरियल्स जो आपको खुद से पढ़ने हैं मैं आपको बताने वाली हूँ आज की क्लास में एंड बाकी आर्टिकल्स को हम एनालाइज करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हियर्स अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. आप सभी के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है. So as you can see on the screen also that Unacademy has launched T20 Daily Current Affairs Test Series, and these are going to be the free test series for UPSC CSE. So they are going to give you every day at 7:30 p.m. 20 questions. You will be given 20 minutes to solve those questions, and the language of the questions will be in both Hindi and English. So these questions will be current affairs based. So daily you can revise your current affairs, whatever newspaper you are reading, whatever articles or website you are reading, you can revise the current affairs through these T20 Daily Current Affairs Test Series. Now, how to enroll in these classes for free? You have to download the Unacademy's learning app, register and sign in on the app, select the goal as UPSC CSE and click on the link which is given in the description box. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज का ना लिंक दिया हुआ है. इस पे क्लिक करेंगे एंड देयर विल बी अ प्रॉम्प्ट ऑन द स्क्रीन टू अनलॉक दी. इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम यूजर ऑफ अनअकैडमी, तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो या नहीं भी हो यूजर, यानी कि आपने सेकंड थर्ड टाइम ओपन किया है ऐप, तब भी अगर प्रॉम्प्ट आता है टू अनलॉक द प्लस एक्सपीरियंस, यूज दिस कोड अर्पिता10. Okay, so through this course any test series for free on Unacademy Plus, any lecture for free you can watch, okay, using this code. So do enroll in these test series. They are going to be very beneficial for the upcoming preliminary examination. Okay, chalo, now coming on to the important news articles. Groom brother arrested in UP under anti-conversion law. So as you can see in this news, anti-conversion law has been highlighted. अभी हमें पता है कि उत्तर प्रदेश ने एंटी कन्वर्जन लॉ पास करने की बात कही है, राइट? उत्तर प्रदेश इज ट्राइंग टू पास ऑन द एंटी कन्वर्जन लॉ. सो व्हाट इज इट दैट वी हैव टू स्टडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर 2. तो ये हमें जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है. सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस 2020. 2020 में जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था, ठीक है, उसके प्रोविजंस क्या है ये समझ लेते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोविजंस फर्स्ट. सो द लॉ प्रोहिबिट्स कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, force, fraud, undue influence, coercion, that is pressure or force, allurement or marriage. तो ये जो लॉ है ये प्रोहिबिट करता है, इट प्रोहिबिट्स, इट स्टॉप्स द कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर. एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में अगर कन्वर्ट करने के लिए आपको मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, फ्रॉडफुली आपको कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, या मैरिज करवा कर कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, उस केस में ये लॉ काम करता है. And the marriage in the such cases will be declared as शून्य. शून्य means null and void. शून्य का मतलब क्या होता है? null and void. ठीक है, शून्य means zero, null and void. तो अगर ऐसे केस में मैरिज होती है जबरदस्ती, रिलीजन कन्वर्ट करने के पर्सपेक्टिव से मैरिज हो रही है, तो उस केस में वो मैरिज null and void हो जाएगी. If sole intention was to change girl's religion, in that case the marriage will be not valid. The persons forced the girl to change religious conversion may face jail term of up to 10 years. तो वो लोग, person is highlighted, the people who are entering into such things, trying to force a girl to get married just with the intention of changing a religion, those people will be punished with a jail term of up to 10 years if the girl is minor, okay, or a woman from scheduled caste or scheduled tribe, if the person involved in the religious conversion on mass scale. So for the rest of the cases, the jail punishment will be 1 to 5 years only. But in the cases if the woman is from scheduled caste or scheduled tribe, if she is a minor, or the person is carrying out the religious conversion through large scale marriages, in that case 10 years of jail term will be given. The law also provides for the way to conversion, यानी कि वे भी mentioned है कि किस तरीके से, अगर इस तरीके से conversion हुआ तो हम इस law को enact करेंगे.
person willing to convert to other religion would have to give it in writing to district magistrate at least 2 months in advance. तो वो इंसान जिसको जो अपनी राजी से अपनी मर्जी से रिलीजन कन्वर्ट कर रहा है, द पर्सन इफ because of his own will she is converting a religion, or he or she is converting into another religion, those people have to give it in writing to the DM. आप DM बनोगे आगे जाकर, तो DM को राइटिंग में देना होगा 2 महीने पहले एडवांस में. The burden to prove would be on the person who caused the conversion or the person who facilitated it. Underline this is very important. And if any violation is found under this provision, then she or he will face a jail term of 6 months to 3 years. This is again important for prelims also. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Let's move forward. So why UP has drafted such an ordinance? अब उत्तर प्रदेश ने ऐसा ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट ही क्यों किया है? Because in the past few months there have been increasing cases of love jihad. पास्ट कुछ महीने से ना लव जिहाद के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, राइट. दैट इज वाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज टेकन सच स्टेप. इसीलिए उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है. एंड इन यूपी फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स दीज केसेस ऑफ लव जिहाद वर कमिंग अप. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस लव जिहाद. अब ये लव जिहाद क्या है, ठीक है, बिकॉज दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लव जिहाद लॉ ऑफ उत्तर प्रदेश. इसको लव जिहाद लॉ भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में. तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन जीएस पेपर 2? जीएस पेपर 2 में आप किस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्वेश्चन कैन बी, राइट इट डाउन, व्हाट इज लव जिहाद. इसके ऊपर ना ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज लव जिहाद. देन दे कैन आस्क critically analyze the issues associated with the law against love jihad. ठीक है, तो इसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए. ये क्वेश्चन आपका आ सकता है. दिस कैन बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी एंड जीएस पेपर 2 गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशंस. तो ये 2 पेपर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, सो हियर इन द इंट्रोडक्शन यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज लव जिहाद. इंट्रोडक्शन में आप एक्सप्लेन करोगे लव जिहाद क्या है. ठीक है, एंड देन यू विल स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द होल कंट्रोवर्सी अराउंड लव जिहाद, the proposal which has been put forward by UP. Now you have to critically analyze. That means ये जो provision, ये जो ordinance पास हुआ है, इसके plus points and negative aspects दोनों आपको mention करने हैं. This proposal is a very dangerous mix of patriarchy and communalism. That also you can mention, and the idea was propounded by UP Chief Minister. So it legitimizes a term that constitutes an obvious insult against the interfaith marriages. अब love jihad जो है ये term insult करने के लिए भी बनाया गया है. interfaith marriages के केस में हम ये term दे देते हैं कि love jihad हो रहा है, right? Sometimes the marriages take place because of the will of the 2 consenting adults also. ठीक है, तो आप ये सारे points उसमें इसमें flaw क्या है provisions के, ये सब आप mention करोगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो व्हाई नाउ द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द लॉ. अब इस लॉ के अगेंस्ट जो क्रिटिसिज्म्स हैं वो देख लेते हैं. मेनी क्रिटिक्स ऑफ द लॉ हैव पुट फॉरवर्ड अ फ्यू इश्यूज रिगार्डिंग द लॉ. फर्स्ट इज अलाउइंग द पुलिस टू एग्जामिन सब्जेक्टिव इंटेंशंस ऑफ men and women entering a marriage. It veers into thought control and sets the law up for rampant abuse. So here you are trying to judge the intentions of the men and women, the 2 consenting adults who have agreed to marry each other. That is a rampant abuse of the law. Police is trying to forcefully also in some cases change the mind of the male or change the mind of the female. Law against fundamental rights, because article 21 gives you the right to marry. right to marry आपके article 21 में दिया गया है. So if you are trying to prove that the person is willfully or is being pressured or is being forced, not willfully but pressured and being forced to marry somebody from the other religion, right? So in that case you are violating the fundamental right of that person. So you are trespassing the fundamental right. That is clear violation. Okay, now what is this term love jihad or Romeo jihad? ये term क्या है? This term is a conspiracy theory. It means that Islamic men target non-Islamic women for religious conversion by feigning their love. Now basically ये जो love jihad term है ये यूज़ किया जाता है एक तरीके से, ये conspiracy theory है. इसमें जानबूझकर ये बोला जाता है कि
इस्लामिक मैन जो हैं, इस्लामिक आदमी जो हैं इस्लामिक फेथ के, वो जानबूझकर नॉन इस्लामिक विमेन को टारगेट करते हैं उनका रिलीजियस कन्वर्जन कराने के लिए, उनको प्यार में फंसाते हैं, ठीक है. So this theory is completely unproven. The theory got national attention with alleged conversions first in Kerala and later in Karnataka in 2009. And in 2010 also the speech of then CM of Kerala created widespread allegation and controversy also regarding this theory. Okay. आगे बढ़ते हैं. एंटी कन्वर्जन लॉ एट सेंट्रल लेवल. सो व्हाट आर दिस इज एट द स्टेट लेवल, यूपी के लेवल पे हमने अभी तक पढ़ा. सेंट्रल लेवल पे कौन कौन से लॉज हैं. सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रपोज्ड वेरियस बिल्स बट नन ऑफ देम पास्ड एंड बिकेम अ लॉ. काफी बिल्स हाउस सदन में पास हुए थे, हाउस में पास हुए थे, बट लॉ नहीं बने. द बिल्स वर इंडियन कन्वर्जन रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन बिल 1954, बैकवर्ड कम्युनिटीज रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल 1960, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल इन 1979, बट नन ऑफ देम बिकेम एन एक्ट. इनमें से कोई भी एक्ट नहीं बन सका. In 2015, Law Ministry said passing of any law on religious conversion is purely a state subject. Again, very important fact for your prelims. ये काफ़ी important fact है prelims के लिए कि अगर कोई भी religious conversion के ऊपर आपको law पास करना है वो state subject है, तो इसमें central government pressurize नहीं कर सकती, उसका कोई role नहीं होता. ठीक है. Now is Uttar Pradesh being the only state to start law for forceful conversion? No, Odisha also tried to pass a bill in 1960, but in 1968 the first anti-conversion law, right? Then 10 other states, Himachal Pradesh Freedom of Religion Act was also passed. Uttarakhand ने भी पास करने की कोशिश की थी एक्ट, ठीक है. बट यूपी has become one of the first state to pass forcible conversion only during interfaith marriages as special legislation. फोर्सिबल कन्वर्जन पे बिल लॉ बनाने वाला यूपी ही एक ऐसा स्टेट बना है, ठीक है. तो चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज एनजीटी सीक्स एक्शन प्लान ऑन एलिफेंट कॉरिडोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूज इज दैट एनजीटी हैज डायरेक्टेड द ओडिशा गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एन एक्शन प्लान विद इन 3 months on 14 identified elephant corridors for providing stress-free migration to jumbos from one habitation to another in the state. एनजीटी के ऊपर लगातार 2017 से क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन एनजीटी, इट्स कॉम्पोजिशन, इट्स ऑब्जेक्टिव, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. continuously from the last 2017's attempt till 2019 the questions have been asked. So do prepare NGT, okay, the composition of NGT, the year of establishment, the manner in which it got established and the objectives. Now what are elephant corridors? इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके मेंस में, ठीक है. What are elephant corridors? Why should we protect elephant corridors? So the question in mains GS paper 3, a lot of time they are asked. Elephant corridors, they are narrow strips of land that connect two large habitats of elephants. एलिफेंट्स के जो हैबिटेट्स हैं उनको कनेक्ट करता है एक नैरो स्ट्रिप ऑफ रोड जिसको हम कहते हैं एलिफेंट कॉरिडोर. सो इफ द एलिफेंट वांट्स टू माइग्रेट फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर ही कैन ट्रैवल फ्रॉम दैट स्ट्रिप ऑफ रोड, ठीक है. एंड देयर ह्यूमन इंटरवेंशन विल बी वेरी लेस. So elephant corridors are very important to reduce animal fatalities due to accidents and other reasons. So fragmentation of forest makes it all the more important to preserve migratory corridors. So why to protect elephant corridors? Because their populations are genetically viable and we need to protect their population. We need to respect their population, and it will also help to regenerate the forest, right? Because you on that strip of land or road you can create much more trees. You can plant much more trees, right? Nearly 40% of elephant reserves are vulnerable. So they are because they are not within protected parks and sanctuaries. So if you create elephant corridors, you need to protect them, right? Because they have no legal protection. Migration corridors का कोई specific legal protection नहीं होता. अगर आपको species को protect करना है तो इन migratory roads को भी protect करना पड़ेगा. Forests that have turned into farms and unchecked tourism are blocking animals' paths. Animals are thus forced to seek alternative routes resulting in increased elephant-human conflict. आपने अभी 2020 के starting में that firecracker incident, you must have heard about it and read about it, right? Now coming on to the need of the hour, finally efforts should be to expand elephant corridors and to also expand protection to these elephant corridors, right? This is the need of the hour. Now a related article is very important in this case. This is important from prelims perspective. ये prelims के perspective से important है. What is Gaj Yatra? Gaj means elephant. Yatra means your journey.
So Gaj Yatra is a nationwide campaign to protect elephants. It was launched in 2017 on World Elephant Day and campaign is planned to cover 12 elephant range states. Okay, तो ये जो कैंपेन है इसका लीडर कौन होगा? Who will lead this campaign? It will be led by वाइल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज WTI. ये इंफॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस एडिटोरियल यू हैव टू रीड योर सेल्फ. ये एडिटोरियल आपको खुद से पढ़ना है. अ मिराज सोल्ड एज पैनिकी फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. So this is important for both mains GS paper 3 and prelims also. Here you have to know about the 3 new labor codes that have been passed. The Industrial Relations Code and the Social Security Code and Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. ये 3 कोड आपको prelims and GS paper 3 के लिए पढ़ने हैं. And what are their provisions, key analysis, key points of the code and the challenges which these codes are facing. So I have told you what you have to study in this editorial. Okay. Coming on to the next editorial, the tennis track. Now here you have to study about the RBI Monetary Policy Committee and what are the current policy rates. Again economics के perspective से ये आपका important editorial है. Prelims के perspective से, GS paper 3 के perspective से आपको MPC के बारे में पढ़ना है और current policy rates क्या है, repo rate, what is it, SLR. ठीक है, so what are these CLR, ये क्या rates है, ये आपको तैयार करना है. Coming on to the next article, memorial to Kadri Gopalnath dedicated at his birthplace. So in 2019 Kadri Gopalnath ji, he died. He was a saxophone maestro. He and a musical tribute was given to him. So this is important for prelims. Kadri Gopalnath is also known as Saxophone Chakravarti. He was an Indian saxophonist and one of the pioneers of Carnatic music on saxophone. He was awarded Padma Shri in 2004 and it was presented with the Sangeet Natak Academy Award for Carnatic music also. And he's the first Carnatic musician who was invited in BBC Promenade concert in Royal Albert Hall in London in 1994. A very important point for prelims. Musical personalities के ऊपर questions बहुत आते हैं prelims में, तो ये आपको prepare करना है. ठीक है. Coming on to the next article, Hampi chariot cannot be touched. So the tourists can no longer get too close to the iconic stone chariot in front of Vijay Vittala temple at Hampi, a UNESCO World Heritage Site, because it is undergoing archaeological development and maintenance. So that is why the tourists cannot go near to this temple. Stone chariot is amongst the 6 monuments. The others are the Red Fort in Delhi, Sun Temple in Konark. अब these places, where are they located? You have to study them. ये prelims के लिए important है. They will give you the name of these structures and they will ask you in which state they are currently located. Taj Mahal in Agra, Goa churches and Padampani painting in Ajanta caves. So they also are, the Hampi chariot is also featured on the Indian currency note. Okay. So let us understand this. It is one of the UNESCO World Heritage Sites in India. It is in Karnataka, located within the ruins of the city of Vijayanagar Empire. Emperor Ashoka's minor rock edicts in Nittur and Udegulan, they are also established over here. ठीक है, ये आपको याद रखना है. And where is it, on the banks of which river it is established? Tungabhadra river. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. Coming on to the last article, plea to declare emergency unlawful. So a petition has been filed in the Supreme Court to declare emergency as unlawful. एक petition दायर किया गया है. अभी we will wait for the verdict of Supreme Court, but just the petition has been filed. So over here you have to study about emergency and what are the different kind of emergencies. Emergency क्या है? State of emergency refers to a period of governance that can be proclaimed by President of India during certain crisis situations. Under the advice of cabinet ministers, President can overrule many provisions of constitutions which guarantees fundamental rights. Like emergency provisions जो है वो article 352 से 360 में आता है, ये याद रखना है. 3 types of emergencies are there: national, constitutional, financial. ठीक है, so these points you have to remember. And what are the key provisions of national emergency, constitutional emergency, financial emergency, that also you have to study. Okay, so this is very important topic on emergency. काफी important topic है emergency के ऊपर. So this was all for today. I hope you enjoyed today's class. If you really enjoyed it, do not forget to share the video with the other aspirants and subscribe to the channel. Also, you will be getting the class PDF on my Telegram channel. Link is given below in the description box. Thank you.